Hello students, we have just covered Newton's formula for the velocity of sound in gases. हमने अभी अभी न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस कवर किया और फिर उसमें एरर देखा, फिर हमने लैप्लेस करेक्शन भी लगाई। और लैप्लेस करेक्शन सिंपली क्या है कि न्यूटन ने बल्क मॉडुलस लिया था, दैट इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रेशर, बट लैप्लेस ने जो लिया है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू गैमा पी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर ये न्यूटन ने पी कैसे ले लिया और लैप्लेस ने गैमा पी कैसे ले लिया, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक स्पेशल फुटनोट में अपलोड करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? लेट मी रब इट फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, आई हैव रब्ड इट, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सी हाउ bulk modulus is equal to gamma p in Laplace. You know, the formula was given by Laplace, gamma p upon rho. Look, students, Laplace assumed adiabatic expansion. Laplace assumed adiabatic expansion. So let us differentiate it with respect to V. To P as it is gamma V to gamma minus 1, V to gamma as it is ddt V of P, and that is constant 0. So gamma P, V to gamma upon V, V to gamma plus dp upon dv equal to 0. So V to gamma is taken constant, gamma p upon V plus dp upon dv is equal to 0. Correct? Now students, V to gamma cannot be equal to 0. This implies gamma p upon V plus dp upon dv is equal to 0. This implies dp, the stress, upon dv is equal to minus gamma p upon V. This implies gamma p equal to minus dp into V upon dv. This implies gamma p equal to minus dp upon dv upon V. This implies dp upon dv upon V is bulk modulus, because dp is a stress, dv is upon V is volumetric strain. Interesting. So this is how V is equal to P upon rho. This was put forward by Newton, but V is equal to by Laplace. Interesting. So Laplace corrected and modified. One of the student is asking me, sir, how Newton has replaced B with P? Very simple. क्योंकि न्यूटन को भी हम नाराज नहीं करते. For Newton, PV equal to constant, that is temperature constant, isothermal. Now P dV
v dp upon dv is equal to 0, डिफरेंशिएट किया, so p is equal to minus dp upon dv upon v. This is world modulus. Negative sign simply shows that it decreases. So Newton took how p instead of b, and Laplace took how gamma p instead of b. Hope it is clear. Thank you very much, students.